Arshdeep Singh emerged as the last over hero as India clinched the final game from the jaws of defeat to make it 4-1. A number of Indian youngsters came up with the goods at the audition. In this session on Off the Pitch with Ankit, we will give Indian players marks out of 10 and also figure out who can push for a spot in the T20 World Cup that's coming up in the next few months. And to do that and discuss it and Off the Pitch with Ankit, we have with us joining at this point of time Biswajit Jha, who's an ex-sports journalist and an author. We have Utkarsh and we also have Ashutosh joining us at this point of time. Biswajit, I'll start with you. A comprehensive win. Things could have been going here and there, but eventually India came out trumps, winning the series 4-1, which is a good scoreline, you see. Uh, Now let's rate the Indian players. As you can see, the top band reads report card marks out of 10. Let's start with Rituraj Gaikwad. So Biswajit, how much would you actually give Rituraj Gaikwad, who has scored 223 runs at an average of 55.75 and a strike rate of 160, somewhere near 160. He has 150 and a century. How much points will you give him out of 10, Biswajit? And then we move on. Yeah, 7 or probably 8, Rituraj, because he played really well. The two knocks he played, one the century it was really a knock, really a very very free flowing knock, and he didn't try to hit like across the line, and he played all the cricketing shots. So he is very bright future for India, and he can play in all the formats also because he has a great technique, and he doesn't need to play across the line to get runs, and which is a great sign for Indian cricket. Biswajit, bright future, all right, but let's talk about the near future over here. And in the near future, we have the T20 World Cup coming up. क्या आपको लगता है ऋतुराज गायकवाड का मौका मिल सकता है now that you know Rohit Sharma and Shubman Gill are probably there as your first choice openers? Do you think Rituraj fits the bill as your reserve opener, Yeah, Biswajit? obviously, why not? Why not? But we have time also, and we don't know whether Rohit Sharma will play or whether he doesn't play. So if he plays, so if he is in the team, so he is the number one choice wicketkeeper. And then we have Shubman Gill also open in T20. But I don't know about like then the reserve opener will be either Jaiswal or either or See, Ruturaj Gaikwad. Biswajit Jaiswal had his chances in this series, but somehow Jaiswal did not fare like he was expected to, scoring about 138 runs in 5 games. He had 5 games, he had the opportunity, but somehow he failed. One feels. What do you feel? Has No, Jaiswal no, no. I failed? don't. I don't think he failed. He gave India brisk starts in almost all the matches, and he showed that what a talent he is. So like But 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 Biswajit, his stats speak otherwise because no, no, he's you got don't. all these runs at an average of 27. But yes, the interesting bit over here is his strike rate, which is at 168, and that's staggering as an opener. No, no, So no. how much would you The give way he Jaiswal no, no, no. out of The 10? India's win in this series is also because of the fact that that Jaiswal almost, barring one game, almost he gave a very good start and big start and took the attack to the opposition. Jaiswal is very important because he's in T20 also. Like amount of run like is important, but sometimes more than that the impact he had in this series. So in term of impact, in term of giving India a very good start, I think Jaiswal will score near like 6 for me. So Jaiswal scores a 6 for you. Rituraj Gaikwad scores a 7 for you. 7 Utkarsh, or आपसे 8, कुछ 8 probably, 8 probably. Okay, 8 for Rituraj Gaikwad and 6 for uh, Jaiswal. Jaiswal, right? Yashasvi Jaiswal. I'll come to you with the same question, Utkarsh. आप कितना मार्क्स देंगे 10 में से ऋतुराज गायकवाड को और जायसवाल को? I will give Jaiswal a 7 because we all know that जायसवाल ने जो एक मैच को छोड़ के ना उनने सब में फायरी स्टार्ट दिया और अगर वो स्टार्ट नहीं देते तो शायद जो इंडिया का टोटल था वो 200 के पार भी नहीं पहुंच सकता था, थोड़ा नीचे रह सकता था। इवन 160 वाले मैच में भी जो उनने
वो एग्रेसिवली खेल रहे थे, उनका माइंडसेट एकदम पूरा क्लियर था कि मुझे बॉलर्स को अटैक करना है, कहीं भी डिफेंड नहीं करना है। तो ये बहुत ही बड़ा उनके लिए भी प्लस साइड है कि उनके पास कोई प्रेशर नहीं, ऊपर से वो यंग, अभी यंगस्टर है, तो वो अपने आप को शोकेस कर रहे हैं कि कोई से भी बॉलर्स हो, कोई से भी पिच हो, मैं अपने एग्रेसिव स्टांस ही रखूंगा, मैं एकदम फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलूंगा। और रही बात गायकवाड की, तो मैं उन्हें 9 दूंगा, बिकॉज वो फर्स्ट मैच के अलावा उन्हें डिसेंट परफॉर्मेंस करा था, और फिर जो उनकी थर्ड मैच में जो उन्हें सेंचुरी करी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल इनिंग्स, तो उन्हें पूरी फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेली थी। स्टार्टिंग में मुझे याद है वो 22 रन पे, वो 22 बॉल्स पे थे, बट उसके बाद जो उन्हें एक्सलरेट करी थी अपनी इनिंग्स, वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल थी। तो आई विल रेट हिम अराउंड 9। But don't you feel, I can understand Utkarsh ki, Rituraj Gaikwad got the runs and all of that, but his strike rate still happens to be a problem because in T20s जैसे रोहित ने दिखाया है ODIs में, that start is very important to Utkarsh, and Rituraj Gaikwad takes his time initially. So do you think India's template would be something similar when it comes to the T20 World Cup, where you start a little slow and then you pick up in the middle overs? Is that going to be the template, or it's going to be ultra aggressive from the start? क्या होने वाला है उत्कर्ष? सी व्हाट आई फील इज, जब अगर गायकवाड और जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि जो जायसवाल है वो एग्रेसिव स्टांस लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करते हैं, एंड गायकवाड जो है वो सेकंड फिडल के रूप में खेलते हैं कि अगर विकेट्स भी जा रही है तो मैं एक एंड होल्ड करके खेलूंगा, और अगर जायसवाल अटैकिंग खेल रहे हैं तो मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दूं कि वो ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कर सके। फिर हमने देखा, हमने 30-20 में भी देखा था, विकेट ज्यादा थी और गायकवाड ने एक एंड होल्ड करके रखा था, उसी की वजह से इंडिया, उनने फिर एंड में उसको कवर अप भी करा था, ऐसा नहीं था कि उनने वो वहां पे कवर अप नहीं करा, उनने कवर नहीं, अप भी करा, कवर और अप तो इंडिया का किया जो उत्कर्ष। मैं ऐसे दिन का बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने बॉल भी वेस्ट किया, वेस्ट नहीं कह सकते, 22 बॉल्स 22 रन, एंड क्या होता अगर वो 30 बॉल में 35 बना के आउट हो जाते? दैट वाज अ डिफरेंट डे एंड ही वाज इन गुड फॉर्म, तो उन्होंने 100 बना दिया। बट क्या होता है, इफ यू गेट अ स्टार्ट लाइक दैट, यू हैव टू कैपिटलाइज। इफ यू डोंट, देन यू हैव वेस्टेड दैट स्टार्ट एंड बॉल्स एज वेल। सो आप कितना मार्क्स देंगे? 9 आउट ऑफ 10 फॉर गायकवाड, एंड फॉर यशस्वी 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10। आई मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। आई आस्क आशुतोष द सेम क्वेश्चन। आशुतोष, आप क्या मार्क्स देंगे ऋतुराज और यशस्वी जायसवाल को, और क्यों? आई थिंक यशस्वी को मैं 7 दूंगा, 7, बिकॉज जो एक्चुअल में जो स्टैट्स हमें दिख रहे हैं वो इंटेंट नहीं दिखा रहे, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे जो एक्चुअल में रही है। विश्वजीत सर ने भी इस बात को बहुत फ्रीली बोला कि जो इम्पैक्ट उन्होंने मैच में क्रिएट किया उसकी भी हम वैल्यू करेंगे। जो स्टार्ट वो दे रहे थे, जैसे स्टार्ट इंडिया को नीड थी, वो सबसे जरूरी बात है। इस वजह से यशस्वी को 7, और ऋतुराज को लेकर मुझे लगता है 8, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी वो चीज, जो पोटेंशियल हम देख रहे हैं, जो हम आईपीएल में देखते हैं, ऋतुराज उसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज है। ऑफकोर्स उन्होंने 100 बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया था, 50 भी है उनकी, स्टार्टअप अच्छे ले रहे हैं, बट वो जो है ना कि एक पोटेंशियल जो उन्होंने सीएसके के लिए सेकंड सीजन में जब वो खेल रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरे सीजन खेला था, वो अभी भी कहीं ना कहीं मिस लग रहा है। वो 2-3 मैचेस के बाद उन्हें अचानक से एक किक मिलती है, फिर वो करते हैं एक कंसिस्टेंट। अगर वो उस तरीके की परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो 8 जो है वो 10 पे जाएगा, वो परमानेंट मेंबर भी हो जाएंगे, बिकॉज वी बोथ नो कि कितना टैलेंट है उनमें और कितनी अच्छे से वो अपनी इनिंग को कैपिटलाइज कर सकते हैं, एंकर कर सकते हैं। ये बहुत रेयर है कि आप एक एंकर भी का भी रोल प्ले कर सकते हो। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऋतुराज उस चीज को मिस कर रहे हैं, इस वजह से 8। ठीक है, मूविंग ऑन बिस्वजीत, लेट्स कम टू नंबर 3, एंड देयर हैव बीन अ number of number 3s in this tournament for India. Let's talk about श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर 2 मैचेस खेला और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेला कल on a sticky Bangalore wicket. He got a 50, and that proved to be very crucial. So in 2 matches, I think Shreyas Iyer has about 61 runs. How much would you give him out of 10? No, no, yesterday's innings is very important. It showed that he has that like potential to be one of the best in T20 also, like ODI. His T20 is his natural game because he likes to attack, and it suits him perfectly also. So I will give him 6 here because for the last match knock. For first match, it happens in T20. Look, T20 is a high chance game, and that's why you have seen that Jaiswal, despite playing so well, when you try to attack the opposition
from the ball one, it may happen that you may get out cheaply. But you have to see the impact of the player on the match. So you're So giving, the six. श्रेयस अय्यर 6 out of 10. उत्कर्ष आप Hmm. कितना देंगे? क्या आप विश्वजीत से सहमत है? उत्कर्ष आई ऑल्सो एग्रीड विद विश्वजीत, मैं भी उन्हें 6 से दूंगा, बिकॉज उन्हें पहले मैच में ठीक है वो हैपन हो जाता है कि प्लेयर इतने थोड़े टाइम बाद आ रहा है तो वो स्टार्ट नहीं दे पाते, बट सेकंड मैच में जो उन्हें इनिंग्स खेली थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसी की वजह से जो इंडिया थी 160 प्लस पहुंच पाई थी, तो मैं भी 6 उन्हें दूंगा। काफी क्रूशल नॉक था कल का श्रेयस अय्यर की तरफ से, क्योंकि देखा जाए तो बैंगलोर का जो विकेट था उतना अच्छा था नहीं बैटिंग करने के लिए। इट वाज क्वाइट अ स्टिकी विकेट जहां पर बॉल रुक रुक के आ रहा था, एंड बॉलर्स जो लोग कटर्स वगैरह पे विश्वास कर रहे थे, दे वर रिपिंग द रिवॉर्ड्स। आशुतोष आपसे पूछना चाहते हैं, अब विश्वजीत और उत्कर्ष ने 6 out of 10 दिया है श्रेयस अय्यर को, आप कितना देना चाहेंगे श्रेयस अय्यर आई को? थिंक 5, बिकॉज जिस तरीके का आपके उस नंबर 4 और नंबर 3 की पोजीशन के लिए कंपटीशन है, आपको लगातार परफॉर्मेंस देनी होगी। आप जस्ट बिकॉज आपको अचानक से एक मैच या 2 मैचेस में अब मिल रहा है मौका, आप उसमें एक मैच परफॉर्म करो कि नहीं करो, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, शायद वो परफॉर्म ना कर पाए। अगर आपके पास इतने 3 या 4 नंबर के बैट्समैन हैं T20 आपके जो है सेटअप में, तो आपको लगातार उस परफॉर्मेंस को देना होगा। और अय्यर के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको T20 सेटअप में रहना है, खासकर इस टाइम पे, तो नेक टू नेक की फाइट है प्लेयर्स से आपकी, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सीरीज में मिस दिखी मुझे लास्ट। ऑफ कोर्स कल के मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, पर फर्स्ट मैच में मुझे जो उन्होंने खेला था फोर्थ में लग रहा था कि शायद एक वहां पे भी परफॉर्मेंस होती तो कम से कम आप आगे के लिए अपना जो है कहते हैं ना एक दावा अच्छे से रख सकते थे। Yeah, तो मुझे now लगता he है will वो have competition with now he will have competition with Virat Kohli in the team in the number 3 spot. So एग्जैक्टली it will be एग्जैक्टली very एग्जैक्टली difficult for him. एग्जैक्टली सर, जब आप इतने बड़े प्लेयर से मतलब कंपटीशन है आपका, तो आपको उसी लेवल की So you have परफॉर्मेंस to भी be on देनी है। your yeah तो इसी definitely. वजह से मुझे लगता है कि वो 5 पे ही ज्यादा बेटर रहेगा कि 5। पांच पे हाँ ओके या ओके। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट ईशान किशन। द गाय गॉट 110 रन्स। उन्होंने सिर्फ पहला 3 गेम्स खेला, सो ही गॉट 110 रन्स एट अ एवरेज ऑफ 36। उनका स्ट्राइक रेट था 144, बट यस ही हैज गॉट 250s। तो आपको लगता है ईशान किशन ने अपना जो दावेदारी है एक स्पॉट के लिए T20 वर्ल्ड कप में, हैज ही मेड अ फेयर, हैज ही गिवन अ फेयर assessment of himself in these 3 games? बिस्वजीत आपको क्या लगता है? Yeah, definitely. Ishan Kishan is always there in ODI, in T20, in Test match. He has been pushing the like first 11 players for a long time. Now, like he has not been able to cement his place in the team. But at the end of the day, I think Ankit that Ishan Kishan is the like player for whom that all the players in the playing 11 will be on their toes. And I think he will play this kind of role, and it's not easy, Ankit. Like sitting out suddenly, coming in the team, coming into the team, sitting out, coming into the team. But he has shown that perseverance, that mental, that focus. He doesn't get out of the focus when he doesn't play the match. I And agree I with you, think Biswajit, because I agree with you over here, Biswajit, because the word is perseverance. The guy has been there, stuck it out. Because initially एक सोच था कि ईशान किशन is an opener और कोई position में खेल नहीं सकता है. But in the Asia he can Cup play. games, he showed that middle order भी वो लगभग संभाल लेते हैं. And And उनका that kind of दावेदारी, player, yeah, that kind of player, Ankit, or team management always values that kind of player. That suddenly you are coming and and you are ready to do you are ready to what do everything. also what works in Ishan Kishan's favor is the fact that he's a left-hander. So again, he's a Lefty. rarity and And very special as well. more than that, Ankit, more than that, he is ready to. He always his hands is up that I can do anything. I can open and team management. Every team needs this kind of player, and more than like his stats, his So how runs. much would you give Every him team out of 10? management How much would you give him out six of 10, six Biswajit? six 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 Six. six. You are quite a tough taskmaster, a very, what an invigilator you are. किसी को तो नॉर्मल्स भी दे दो विश्वजीत. But okay, fair enough. That's देंगे अभी तो entertaining. players are बाकी coming. है, काफी है. आशुतोष आप कितना दोगे बताओ ईशान किशन को? यार 2 हाफ सेंचुरीज मारा बंदे ने 3 मैचेस में. 8.5 शायद 8.5 8.5 बिकॉज देखिए मतलब जो विश्वजीत सर ने कहा ना कि
आपको एज अ प्लेयर हमने डिसाइड किया था कि आपको ओपनिंग कराएंगे, उसके बाद आपने नंबर 3 दिया उनको, नंबर 4 एग्जैक्टली। दिया, नंबर 5 दिया, नंबर 6 पे भी उन्होंने खेला, और और ऐसा वो नहीं है दो कि तीन पोजीशंस के दावेदारी में सिर्फ है आशुतोष। वर्ल्ड एग्जैक्टली कप नंबर स्क्वाड में 4 वो और दो नंबर तीन सिर्फ आप ओपनर भी, ओपनर भी, ओपनिंग ओपनर एग्जैक्टली भी। आप ओपनर का स्लॉट तो चलो हटा दो, बिकॉज आपने उनको उसी तरीके से आइडेंटिफाई किया था, आपने नंबर 4 हम्म, नंबर 5 की पोजीशन के लिए भी दावेदारी ठोक दी है। और जिस हम्म। तरीके से वो अपनी इनिंग को बिल्डअप कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सूट भी कर रहा है उनको भी। और तो आप आप 10 अगर में कितना दोगे? आप 10 में कितना दोगे एट ईशान एंड हाफ किशन को? एट एंड हाफ एट एंड हाफ 8.5। फैंटास्टिक। उत्कर्ष आप कितना दोगे? मैं उन्हें 7 दूंगा, बिकॉज हमने देखा जब ईशान किशन बैटिंग करने आते हैं ना, स्टार्टिंग में जो उनकी इनिंग्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा एकदम पैसिव होकर खेलते हैं। वो अराउंड 10-15 बॉल रहते हैं, 5-6 रन मारते हैं। तो ये जो है ना, जो अदर बैटर होगा उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि यार, अगर जो ईशान किशन अगर रन नहीं स्कोर कर रहे तो मुझे स्कोर करना होगा, तो यहाँ पे विकेट्स लूज करने के भी चांसेस होंगे। बट एक प्लस पॉइंट ये है कि हमने ये देखा है कि ईशान किशन ये है कि टॉप 4 पे कहीं भी बैटिंग कर सकते हो, उन्हें ओपन भी करवा लो, नंबर 3 भी बैटिंग करवा लो, नंबर 4 भी, वो कहीं पे भी फ्लोट कर सकते, इवन वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हो। तो ये, और ऊपर से आपने पहले ही बोला था कि वो लेफ्ट हैंडर है, तो ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्लस ही पॉइंट इज है। अ So I will rate multifaceted, around 7. versatile. So he's a Yeah. multifaceted, versatile kind of a cricketer, right? Moving on. Moving on. Let's talk about the captain, the interim captain, as one might call him, Surya Kumar Yadav. The guy has scored 144 runs in 5 games at an average of 28.80. But his strike rate is pretty decent, pretty good, 160. And if you remember, he won us one of the games. You know, if he finished one of the games at Vizag. So yes, Surya Kumar Yadav won. How do you rate his captaincy and also Surya Kumar as a batsman? Biswajit, marks out of 10. Surya Kumar Yadav. Yeah, yeah. He has been like like it's surprising for all of us that he really actually he didn't fire in ODI despite team management tried their best to make him fire. But at the end of the day, he didn't fire in ODI cricket in the World Cup. But once he is in this format T20, he is like it is his This is own his arena format. Biswajit, this is his his format, format. and in the But what first is match his he proved position according to you? You are good with Surya Kumar Yadav's positions. Biswajit, no, what's he a can good position for him in depending if T20s? Kohli comes into the team, then he can bat at number 4 or number 5. In T20 he won't be batting at number 6. Actually, he will be batting at most of the Exactly, he will be exactly. batting at, if Shreyas is there, he can bat at number 5. But he needs to have this because he is the best batsman, or everybody accepts it, whether he succeeds in ODI or not. He is the best batsman in this format. He is the champion. He is the master of this, So and out his of 10, how captaincy much do also you has give him? Out of 10, how much would you give him? out of 10 again with captaincy. He has done a good captaincy also. It's his debut as a series as a captain. He has done as a captain and as player both. I will give him 8 Oh, that's good, Biswajit. According your because as per he your has standards, captained. this as per your Yeah, standards, because this is really good. he has captained and he has inspired the young team, and Exactly. he has in difficult situation also, when India was bowling, and he has lost all the tosses. That is the only drawback, and he doesn't have anything to do with it. But But good, we but won at the the end of the matches. day, yeah, we won the matches in tight situation. He kept his cool and he marshaled his resources very well. Okay, can we just move ahead? Ashutosh, let's just make it a little quick because काफी सारे players हैं. So Ashutosh, out of 10 तुम कितना दोगे सूर्य कुमार सेवन एंड यादव हाफ को? 7.5, जस्ट बिकॉज आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट स्टिल उन्होंने अपना रोल बहुत परफेक्टली प्ले किया, तो आई थिंक 7.5। I think you're right. उत्कर्ष आप कितना दोगे? मैं भी उन्हें अराउंड 7 के आसपास दूंगा, बिकॉज हमने ये देखा है कि वो जो फ्लैट पिचेस होती है, बैटिंग पिचेस होती है, वहां पे वो रन स्कोर कर रहे थे। बट जहाँ पे ट्रिकी पिचेस आ जाती है, स्लो पिचेस आ जाती है, वहां पे ना वो थोड़ा सा स्टक कर जाते हैं। तो मैं भी उन्हें अराउंड 7 ही दूंगा। Okay, 7. Let's move on and let's talk about the man of the season. Well, they are comparing him with MS Dhoni. They are calling him the next finisher after MS Dhoni. Well, Dhoni was a bona fide finisher. But have we found Dhoni's successor in Rinku Singh? What do you have to say about that, Biswajit? See, Rinku Singh, Yeah, yeah. I am. let me just talk you through his stats, Biswajit. He has scored 105 runs in
5 games. But yes, his average is 52.5. That's because he also remained not out in a few games. But what's stunning over here is his strike rate, which is 175. Do you think he fits in the bill as the finisher Yes, India are yes. looking for after MS Dhoni? I am very, very impressed with Rinku Singh because I had some doubts because some players performed really well in IPL, but they failed in the international arena. But he has shown that he is the transition has been very good, and he has actually impacted in 3 matches out of 5. First match, he hit that winning 6 run, and that second match 9 ball 31, and I think in the fourth match which India won the series by winning that match also he came little earlier, like not in He last got 2 3 46 overs. of 29 He balls, and that 46 was crucial. 29, and that is also important innings for him, and that innings, so he has impacted three games out of 5 games, so I will give him a 9, because and I'm very impressed with his cool head, his demeanor. He is Look, Dhoni was a very good finisher, but Dhoni was like in the later part of his innings, he was not that kind of hitter. Like it was not that like Dhoni he was was a finisher who good. was trying to get Uh, as close to the target as yeah, possible. yeah. But this man, and he is so, and giving his like upbringing, giving his background, everything, considering everything, the way he came out, it's an amazing story. I have made a YouTube video on my So Bengali 9 out YouTube of 10 channel for also. Rinku Singh. So Moving 9 out ahead. of 10. Yeah. Right. Ashutosh, I'm a big fan of Rinku Singh right now. The same pinch, the same pinch. मैं भी हूँ Rinku the fan. way he conduct himself, मतलब लिटरली आप इम्प्रेस होते हो। फर्स्ट मैच में लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए, बंदा छक्का मार के मैच जिता रहा है। ठीक है, नो बॉल है, आपको रन मिल गया, बट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो मेन इम्प्रेस करता है। मतलब आई थिंक इंडिया फाइनली, मुझे लगता है नंबर 5 या नंबर 6 का एक बैट्समैन उन्हें मिला है जो बॉलिंग भी कर सकता है, और सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, सब और बार बार उनका उनकी स्टोरी भी काफी प्रभावित करता है, राइट? एग्जैक्टली आप जब उतने उतने सेटबैक से आए हो तो आपको पता है कि आप जहाँ पे पहुंचे उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, वहां पे आपको टॉप पे रहने के लिए कितना कुछ करना होगा। और उससे जरूरी बात ये है कि सब उनके आईपीएल कैरियर की बात करें, उनका रणजी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, 50 से ज्यादा का एवरेज है। तो ऑफकोर्स वो कहते हैं ना, पका हुआ चावल है, फाइनली स्टेज मिल गया है, बस जस्ट गो विद हिम। आई एम अ बिग फैन ऑफ पका संजय सिंह। पका नाइन हुआ चावल है, नाइन एंड खाने हाफ में सॉरी मजेदार। 9.5। 9.5, ओके ओके ओके, 9.5। ए, एवरेज तो अच्छा खासा निकलेगा रिंकू सिंह का। उत्कर्ष, तुम एवरेज खराब मत कर देना। आउट ऑफ 10 कितना दोगे उत्कर्ष रिंकू सिंह को? मैं मे बी 9.5 या 10 दूंगा, बिकॉज उनने ना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट करा है इस सीरीज में। हमने देखा उनके रन्स नहीं, बट जो उन्होंने क्रूशियल स्टेजेस पे इनिंग्स खेले, 4 T20 में उन्होंने 46 रन्स करे। फर्स्ट मैच में भी उन्होंने लास्ट बॉल पे 6 मार के जीता। इवन सेकंड मैच में भी वो जो टारगेट था 200 प्लस ले जाने का, उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, जो उन्होंने 9 बॉल्स में 31 रन स्कोर करे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ये देखा है कि अब रिंकू सिंह जो है ये फिक्स हो चुका है कि वो 2024 T20 वर्ल्ड कप में जा ही रहे एज अ फिनिशर खेलने। Okay. We'll just move ahead a little quickly because time is a constraint now. Bisway, let's talk about Jitesh Sharma. The guy played 2 matches, but again in the middle in the middle overs, he has given you a wicket-keeping option, right? And in the 2 matches, he also played a very crucial role Yeah, yeah, yeah. in the middle He order. has played very well, and he is these are the bench strength India has right now, because So Jitesh को आप and कितना दोगे, just Bisway? have six. 6. Okay, Bisway is back to his standards, low scores देने का. Okay, Ashutosh, आई थिंक Jitesh Sharma. 7.5। बस मेरे साथ जितेश को लेकर एक यही इशू है कि जो उन्हें स्टार्टअप मिलता है उसे 50 या 100 में कन्वर्ट में थोड़ा सा उनका इशू रहता है। आईपीएल में भी यही इशू Okay. रहता है उनका। तो बट आई वो थिंक इशू सेवन एंड रहेगा हाफ। T20s में। हाँ, बस आप मुझे कितना लगता है दोगे? आप सेवन कितना? सेवन एंड 7.5? हाफ 7.5 उत्कर्ष कितना दोगे जितेश को? मैं उन्हें 6.5 दूंगा, बिकॉज उनने स्टार्ट 6.5। तो अपनी इनिंग्स अच्छी करी है, बट वो जो है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो मैं उन्हें 6.5 दूंगा। Okay, let's talk about Akshar Patel. Well, Akshar Patel has picked up 6 wickets, and I think he looked in rhythm. He also put the brakes on the opposition middle overs. May in one of the games he picked up 3 wickets for 16 runs, and on another game he picked up one for 14. So he has also And put the brakes. please tell his economy rate. His economy rate, I'll just tell you his economy rate. It's been 6.2, which is very good Six, which is considering very these good, very good. Indian ground. And that's why
I was not happy with Akshar Patel before he was playing the World Cup because he has lost his rhythm in bowling. He was batting so well, but rhythm in bowling was not good. And I was very happy that he got injured and he didn't play in the World Cup. Though he might not have played in the World Cup, but now in this series, I have seen him bowling really well, really tight, stump to stump. The real Akshar Patel, the bowler, has come, and he has always been a good batsman. Biswajit, So marks out he of lowered 10. down the marks out of 10 is 9. 9. Moving ahead, आशुतोष जल्दी जल्दी करो. Marks out एट of एंड 10. हाफ, एट एंड हाफ, Uh, जस्ट बिकॉज फोर्थ मैच में थोड़ा सी इनकी परफॉर्मेंस डिप हुई थी, आपको भी पता है मैच से, तो आई थिंक हाँ, 8. that's good. उत्कर्ष आप कितना दोगे अक्षर पटेल को? मैं उन्हें 8 दूंगा बिकॉज फोर्थ मैच में वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, बाकी ओवरऑल उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा है। Okay. Let's talk about the player of the series, Ravi Bishnoi. The guy picked up 9 wickets at an average of 18. He was a little expensive on the expensive side, where he conceded runs at 8.2. But how much would you give Ravi Bishnoi? Because he also brings in a right armor wrist spinner option, which Yeah. usually a Chahal used to. And in last World Cup, I was not happy that India didn't pick Ravi Vishnu. I think he and Kuldeep Yadav will fight for a place in the T20 World Cup, or like in the final 11 of T20 World Cup. So I think his performance has been very good. He is a typical T20 wrist spinner. His pace is also good. His line and length is also good. It suits him perfectly in T20 format, and he is live wire in the field. He can bat also in the lower down the order. That's why I think that the same reason that's why Chahal is not in the team. I will give him 9.5. We could have extended this debate, but we won't. You will give him how much out of 10? 9.5. अरे वेरी गुड वेरी गुड. ही हैज रियली इम्प्रेस्ड यू बिस्वजीत. आशुतोष आप Yeah. कितना He दोगे has बिश्नोई को? सेम 9.5, बिकॉज आई एम ऑल्सो इम्प्रेस रवि बिश्नोई। तो एक्चुअल में आप उसके विकेट के काउंट से अगर आप देख रहे हो, बट आप ये भी देखो किस सिचुएशन में आके उसने विकेट लिया। ट्रेविस हेड शुरुआत में आके आपको मतलब परेशान कर रहे थे, ट्रेविस हेड उनका टॉप ऑर्डर, आप विकेट लेके जा रहे हो, आप उनके विकेट टेकिंग ऑप्शंस में जा रहे हो, पावर प्ले में आप विकेट लेके दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज है। ऑफकोर्स रन एक 8 का इकोनॉमी T20 में वैसे बहुत बुरा तो नहीं माना जा सकता है, राइट बट हाँ राइट राइट ऑफकोर्स एक राइट. कंसर्न पे आ सकता है, बट द वे ही परफॉर्मेंस, आई थिंक 9.5। 9.5. Great. Utkarsh, how much for Ravi Bishnoi? Make that 10, brother. नॉट 10, मैं उन्हें 9 दूंगा बिकॉज उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी है। एंड हमने देखा था उन्हें उन्हें क्रूशियल स्टेजेस में भी बॉलिंग करी है, उन्हें पावर प्ले में भी बॉलिंग करी है, मिडिल ओवर्स में भी Inside the बॉलिंग करी power है, play. इवन उन्हें डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करी है थोड़ी बहुत। तो मैं उन्हें 9 दूंगा। Okay, 9 for. So he's got a good score. I mean, Ravi Bishnoi, right? Let's talk about the man of the moment yesterday, the guy who won us the game, the middle over hero, Arshdeep Singh. Biswajit, how much would you actually give Arshdeep Singh over here? Yeah, in this series, I am not impressed with Arshdeep Singh. Yesterday, he bowled really well the last over, but I'll give him well, like for yesterday's match, I will give him 6. Okay, fair enough. आशुतोष अर्शदीप सिंह को कितना दोगे? कल के लास्ट ओवर को अगर मैं छोड़ के कहूँ, आई एम ऑल्सो नॉट इम्प्रेस। मतलब कुछ Okay. लॉस्ट लग रहा है अर्शदीप में, जो था इस बार वो कहीं मिस है। कल का लास्ट ओवर आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, बट अगर आप उसके पहले का देखो 5 मैच में, तो वो मिस लग रहा है। कल के सिर्फ लास्ट ओवर के लिए 4। Okay. चार. Okay, Utkarsh, मैं उन्हें you have the एक्चुअली final say and then we 5 wrap के up. आसपास दूंगा। मैं उन्हें 5 दूंगा बिकॉज उनका हमको उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। इवन वो सीनियर पेसर भी थे स्क्वाड लाइनअप में, बट उनने इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहा। इवन जो उनका ओपनिंग ओवर्स भी वो जो डाल रहे थे पावर प्ले में, हर जगह वो रन कंसीड कर रहे थे। सिर्फ फाइनल मैच में उन्हें लास्ट ओवर में ही अच्छी बॉलिंग करी थी, बाकी आई गेस उन्हें अराउंड 40 रन उस मैच में भी दिए थे। तो मैं उनसे इस बार इम्प्रेस नहीं हुआ। So these 5 matches have been really crucial for India's preparation for the upcoming T20 World Cup. In these auditions, we got a few names, and a few names that actually impressed were Rinku Singh. There is Rituraj Gaikwad for the opening slot. There is Rinku Singh as a finisher.
We also found a spinner in Ravi Bishnoi. Akshar Patel came up with his consistent performances. And yes, there is Jitesh Sharma as well who impressed. So all in all, it was a good series for India. We won the series 4-1. Moving ahead, there'll be the South Africa series. Thank you so much for joining me on this session on Off the Pitch with Ankit on India.com. Stay tuned to this website for all the latest across sports. Thank you so much. Thank you.